All right. So starting from the exercise 7.11 definition definite integrals, we'll start with question number 2. All right. No, we'll do with question number 3. Question number 2 you can do. All right. So let us take it to be 0 to pi by 2. All right. Yes. Sin 3 by sin x to the power of 3 by 2 dx upon sin x to the power of 3 by 2 plus cos x to the power of 3 by 2 dx. All right. Yes. Okay. So let it be I. All right. Yes. And then how we are going to do? It seems like Uh, it is very complicated, but it isn't. We have learnt of the property integral 0 to a fx dx equals to 0 to a f of a minus x dx, yes, right? it's So it will be equal to 0 to pi by 2 sine of what is a minus x here? Pi by 2 a minus x x, 3 by 2, sorry, pi by 2 minus x. Yes. okay, upon sine of pi by 2 minus x to the power of 3 by 2 plus, Plus cos 3 by 2 no, into no, it is not cos 3 by 2, it is cos pi by 2 minus x a to the power of 3 minus. by 2, ठीक है, Okay. dx Yes. आराम से लिखने का चीजें. Next, Hmm. I equals to, so we will put this equation number 1. All right, Yes. we will give now coming to this 0 to pi by 2 on the top. What is it? We can write sine of pi by 2 minus x to the power of 3 by 2 more conveniently like this: sine of pi by 2 minus x to the whole power of 3 by 2. 3 by 2. Yes. Okay, so what is it? Sine pi by 2 minus x, cos x to the power of 3 by 2, Cos. right? So it is Yes. cos x to the power of 3 by 2 dx upon, what does it become? Now, Cos x. the same thing is here. So it becomes cos Cos x. of x to the power of 3 by 2 plus what, Minus. cos of pi by 2 minus x to the power of 3 by 2 becomes? Minus of sin x. Not minus, it is plus sign. It's cos 90 minus x is sine, right? Cos 90 minus x is sin x. So Okay. sin x to Yes. the power of 3 by 2 dx, Ah. right? So I equals to, let it be second equation. So can we So can we put here t cos 3 by 2 x is equals to t? why can't we put what's the question? Uh, we put t to cos 3 by cos x to the power 3 by 2? T equals to cos x to the power of 3 by 2. So what does it Yes. become? Dt equals to 3 by 2 cos 1 by 2 x dx, and then the differentiation of cos x is minus of sin x dx. It is becoming more complicated, Okay. right? That's why. So it's just a very simple method. See, we will add, what we'll do, add equation 1 and equation 2. What does the equation 1 say? Can you see? Equation 1 is sin x 3 by 2 So it to the is power 3 by 2 I on plus x 3 I by 2 equals to 0 to pi by 2 sin x to the power of 3 by 2 dx upon sin x to the power of 3 by 2 plus cos x to the power of 3 by 2. Okay? Yes. Alright. Next. What does the question equation number 2 says? It is integral 0 to pi by 2 Cos x to the power cos 3 x to by the 2 power of 3 by 2 upon, up cos x to the power 3 by 2 plus sin x to the power 3 by it is 2. not sin x, it is cos x to the power of 3 by 2, this one, right? Plus sin x to the power of 3 by 2 dx. Is it okay? Yes. Now, so it becomes 2i, and then
Can we take 0 to pi by 2? Can we add these two? Limits are same, right? Yes. Denominators are also same. Uh, So we can write it like Sine power of 3 3 by by 2 plus sin x to the 3 by 2 plus minus cos x power to of the power 3 by 2 dx upon. sin x to the power 3 by 2 plus cos x to the power 3 by 2. So these things get cancelled. So 2i Yes. equals to 0 to pi by 2, 1 dx, right? So what does it become? Hmm. I It's equals to 1 by 2 x limit x 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. Yes. So that So implies I equal answer pi, to half into pi by pi 2 by 2. minus 0. Answer is, Pi by 4. check at the back. Okay. I think it's the same answer. Okay. All right. So are you able to understand? Yes. So the Yes. second That is question, correct. same thing you have to do for the question number two. So question number two is homework. All right. Okay. Okay. And similarly, the question number four, same logic, same thing. All right. Okay. Okay. All right. So in question number 2, we have to take the power as 1 by 2. No need of taking power. You can just evaluate everything inside the square root. You just try to do the same steps, right? Okay. 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 So are you planning to revise this today itself? Yes. So okay, you can do it like over through the OneDrive. Can you give me the homework of physics also of chapter 1 I didn't get. to complete miracles I, of. I didn't get it. Can you just let me know once again? Can you give me the homework of physics of chapter 1? Chapter one, electrostatics. Yes, I have completed the chapter 1 and chapter 2. Okay. So are you done with the derivations? Derivations, not yet, but I want to do Okay. the derivation. First of all, see, talking about physics, Okay, means, the derivation of the means topics. Coulomb's law, Yeah, yeah, yeah. and then we have different other formulas, different other Yeah. derivations also. There is flux, quantization of energy, axial point, equatorial point. Yeah, a moment, then dipole moment inside the uniform Yes. electric field and all those things. So these are very important. So I think we can deal with that in physics class, right? And do not focus on numericals first. Okay. Frankly speaking, numericals come have very low weightage in the board exams. You have to go with the derivations to score good marks, Okay. right? Derivations. Do not focus on numericals, frankly speaking, Okay. because you have a hell lot of thing to do apart from numericals. It takes a lot of efforts to do numericals. First, we should be thorough with the derivations, right? Okay. Derivations, definitions, differences, Definitions. right? Derivations and definitions, diagrams, right? So, can I do numericals after Of means course. chapter chapter? After you finish half of the syllabus, you can practice. All right. Okay. After half of the syllabus. So first of Means all, you I should be thorough with the derivations. okay. Can I complete the three chapter and then I do the Of course, numericals and of course. See, but you should be very selective in doing numericals. You should not practice numericals for every question, every formula, because in board exams there are set like a collection of numericals which are repeated. All right, okay. formulas which are repeated, which are the formulas which are used. Okay, all right. Yes. So you have to go through the previous year question papers and solve the numericals from there. Right. Okay. Okay. So let us go to the next question. So question number 8, right? Very Eight. important question. Question number 8, Mm. right? Question number 2, 4, 6. These are homework. We will do question number 8 now. Okay.
Yes. We'll do question number 7 later. Integral Okay. 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x, right? 1 Yes. plus tan x dx. So this is I, right? Next. Again, we will use the same property 0 to a f of 0 to x f of x is equal dx to is equal to integration of a to 0 to 0 a f f of a. a minus x Oh, dx, right? I learned the formula. Yeah, it's easy to learn with practice, right? So I becomes, we'll apply the formula 0 to pi by 4 Pi by 4 log of pi by log of 1 plus tan of pi by 4 माइनस mm, एक्स dx, minus. ठीक है। Hmm. अब इसमें log के अंदर हमको एक फार्मूला अप्लाई करना है 0 टू पाई बाई 4 log ऑफ 1 प्लस व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज tan of a minus b, Tan of a minus b is tan a tan a minus minus tan b upon 1 प्लस plus tan a into tan b. tan b, ठीक है। so ये हो जाएगा tan a minus tan b अपॉन Means वन प्लस pi by 4 minus tan x 1 plus tan pi by 4 into tan x. ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे हुआ? हाँ. ओके, सो आगे क्या करें बताइए। अब हाँ, इसमें सॉरी, ये तो tan ए बी के बदले में हम वैल्यूज रख सकते हैं ना, हाँ ठीक है। सो tan ऑफ पाई pi बाई by 4 फोर आ जाएगा और ये tan x tan ऑफ x आ जाएगा और ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 4 इंटू tan ऑफ x, ठीक है। अगला 0 टू पाई बाई 4 में वही परेशान से ए भी आ गया, अब करें क्या log ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 इज 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 इज 1 इंटू tan x, okay ठीक है। okay okay yes. समझ में आ रहा है? Hmm. इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 tan x plus प्लस tan x 1 माइनस tan x, ठीक है, डिवाइडेड yes. बाय ये 1 से मल्टीप्लाई करना है पूरा, 1 प्लस tan x, ठीक है। Plus tan x and minus tan x get cancel out and it's be 2 by 1 plus tan x. So it is log of 2 by 1 1 plus plus tan. tan x. Now, what I can do, what is log of a by b equals to log of a minus log of b, ठीक है। B. It is equals to 0 to pi by 4 log 2 So means log of plus 2 integral into 0 log to of pi by 4 log of 1 plus 1 plus x. tan x. So this is And equation one number 2, log of 1 plus tan x is your I. right? So put Yes. same thing. So we can put it like I equals to 0 to pi Integration by of 4 log 2 log 2 pi by minus I. So I get in the left hand side is is 2 it part become 2I is है, equals to 0 to pi by 4, इतना नहीं, अब log कैसे 2. कर देते हैं इंटीग्रल। सो ये होगा x log 2 तो एक सेकेंड, log 2 कांस्टेंट है, सो इंटीग्रल हाँ 0 टू पाई बाई 4 dx, into 1. वेट वेट इट इज हाँ तो x of log 2 हो जाएगा. dx हियर, ठीक है। हर साथ में हम्म. सबके साथ में dx लिखना है, इंटीग्रल है हम भूल गए थे, ठीक है। हाँ. ये dx लगा दो। तो ये हो जाएगा I is equals to x by 2 into log 2. दिस इज I इक्वल्स टू 1 बाई 2 log 2 पाई बाई 4, नॉट पाई बाई 4, x लिमिट्स 0 टू पाई बाई 4, ठीक है। हाँ That implies I तो equals ये to हो जाएगा log 2 log 2 upon by 2. into pi by हाँ 4 minus 5 0, by 2 that is equals to I equals, that implies I equals log to of by 8 2 log upon 2. 1 by 8 log 2, right?
Yes. Are you able to get it? Wait. It is not 1 by 8. It is pi by 8. This pi. Okay. All Yes. right. Bye bye. Wait. I'm sorry. It's same as question number 16. Question number 16. I guess. Yeah, you can apply. Cos pi minus y, the 1 minus. So it becomes. No, it is not same as one. Question number 16. Yeah, you have to do the same thing, but the procedure at the later time will differ. All right. Shall we do the question number 16? Here can we put 2 into pi by 2? No need at all. You can do that, but at first I'll tell you how to do it. You can do that as well, but no need, I guess, for that. So we'll do the question number 16 now because that's for similar kind. Okay, are you getting it? Yes. So question number 16: integral 0 to pi log of 1 plus cos x dx. So what shall be done? It's f of x a to 0 to a f of x is equals to f of a minus x. Integral of f of a minus x limits is 0 to pi, 0 to a. So means it's become a log of 1 plus cos of pi minus x. So we can use the formula integral 0 to a f of x dx equals to integral 0 to a fx dx plus I think wait, it is not a, it is 2a, right? Yes, the formula of 2a. It is 2a, and it is Yes. 0 integral 0 to a fx dx plus integral 0 to a f of a minus x dx, right? You will use the formula here. So it becomes integral 0 to pi by 2 log of 1 plus cos x dx plus integral 0 to pi by 2 log of mm, but again complexities arise, right? So it is Yes. pi by 2 cos pi by 2 minus x, it is again sin x. So if we add it, it becomes 1 plus sin x into 1 minus sin x. So again the complexities log of sin x plus cos x, and then Okay. no, I don't think we can proceed like this. Okay, give me a moment. It's quite difficult from the. It's quite different from the question number 8. Yeah, I guess. Give me a moment. Let me think. It is question number 16, right? Okay, I think we should apply this formula first. Okay, so we'll apply this formula. Integral 0 to a fx dx, right, equals to integral 0 to a f of a minus x dx. This one, right? Okay, your one note is stopped. My OneNote has stopped. Yes. Still, Yes. are you not able to see it? I'm able to see it, but
it's the property. Did you write there? It's not there. Okay, a moment. Can you write something? Of course. Now, Yes. is it visible? Yeah. Yes. 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 Okay. I, I think that you are writing something and I didn't see that. No, no, no. I'm not writing anything. So it is. See, when it is 0 to a, we can use this formula, right? Integrals are Okay. 0, the limits are 0 to a. So it becomes, let it be I. So again, we will take I equals to integral 0 to pi log of 1 Log of plus 1 cos cos of pi I minus by x pi minus 6. dx. So I becomes 0 to Log pi log of 1 1 plus minus cos cos x dx. minus 6. ठीक है, Okay. so ये हो गया in इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. Add both the equations. Yes, adding equation So 1 become I and 2. is equals These to questions are, I know these questions are tough. You have to practice it today itself, right? Equals to 0 to pi log of 1 plus cos x dx plus 0 to pi log of 1 minus cos x dx. ठीक है. yes. अब ये क्या होता है, 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई log ऑफ 1 प्लस cos x प्लस log ऑफ 1 माइनस cos x dx. ठीक है. सो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू पाई log a प्लस log b Yes. log ऑफ Log 1 1 plus plus cos cos x x मल्टीप्लाइड in बाई 1 माइनस cos x. ठीक है. yes. dx. So I equals to 1/2 integral 0 to pi log of a plus b into a minus b. It is 1 minus cos square x dx. Right? So it can be Yes. written as 1/2 log integral 0 to pi log of sine x to the power of 2 dx. Right? So it is again 1/2 into 2 0 to pi log of sine x dx. Are you able to get it? Yes. Okay. Now, अभी दिल्ली दूर है, अभी आंसर हुआ नहीं है, ठीक है. Yes. हाँ, ये कितना हो गया, i इक्वल्स टू 0 टू 1 पाई log ऑफ log साइन sin x. एक्स dx. ठीक है. Uh, वेट अ मिनट. ओके, तो ये थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है. hmm. अब इसको करते हैं. हम्म, एक मिनट रुक जाओ. इसके आगे कैसे प्रोसीड करें. ये बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर के लिए आ सकता है. ठीक है, देखो आगे. नेक्स्ट. अब ये वाला क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 3 वो रखो. ठीक है. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट. Hmm. अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे 0 टू 2a, राइट. एफ Hmm. एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी F of x और dx. 0 if f of 2a minus x equals to fx और f of 2a minus 2a x minus x equals to minus minus of x. ठीक है. तो अब इसमें चेक करते हैं. सो
fx equals to log sin x, f of 2a minus x equals to log of sin कितना है पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है लॉग साइन एक्स होता है। ठीक है, समझ आ Yes. रहा है, साइन एक्स होता है और लॉग साइन एक्स क्या हो गया फिर से एफ एक्स हो गया, तो ये कितना होगा इंटीग्रल जीरो टू ए, टू टाइम्स इंटीग्रल जीरो टू ए log of, so I equals to this log of sin x dx। Hmm. ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। So, अगला, add equation number 3 and 4. फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, टू टाइम्स जीरो टू ए log of sin of not a, it is pi by 2। ठीक है, it is pi by 2 here, pi by 2 log of sin pi by 2 minus x dx, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, Yes. कोई तकलीफ, जो मैंने पहले नहीं है। फॉर्मूला यूज किया था वही यूज कर रहा हूँ। सो आई इक्वल्स टू टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ रहा है। हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को ऐड करते हैं। ठीक है, 5 और 6 को ऐड, 4 और 5 को ऐड करते हैं, ऐड 4 एंड 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई प्लस आई इक्वल्स टू टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस टू टाइम जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। राइट, Right. ये क्या हो जाएगा टू आई इक्वल्स टू टू टाइम्स इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। हाँ। ओके, अगर ये ऐसे आ रहा है तो मैं इसके साथ में एक चीज और ऐड करता हूँ, ये आई हो जाए, ये टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो आई हाँ। इक्वल्स टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ साइन एक्स Side. कॉस एक्स डी एक्स। हाँ। ठीक है, अब मैं इसमें प्लस लॉग डी एक्स को बाहर रखो, मैं प्लस लॉग टू और माइनस लॉग टू ऐसे कर सकता हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट। Yes. क्यों कर रहा हूँ इसका फायदा पता चलेगा अभी। ठीक है, अब बोलोगे भाई ये तो पता है हमको क्योंकि आपने किए हो पहले, तो हाँ ऑब्वियस सी चीज है, पता है इसलिए पता है। तो ठीक है, और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस लॉग टू को हम ले लेते तो ये लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई टू भी हो सकता है ना। सो दिस इज इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ लेफ्ट लेफ्ट नीचे, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो शायद एक मिनट प्रखर, एक मिनट, वेट अ मिनट, मिला, ठीक, हाँ ठीक है ना, हाँ कोई कोई बात नहीं, वो आपका दोस्त है क्या, वो घर के है, हाँ ठीक है, ऑलराइट। सो वी आर हियर, सो लॉग ऑफ, अब मैं लॉग इसमें लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, ये हो जाएगा साइन लॉग ऑफ इंटू। टू साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, हम्म। माइनस लॉग टू डी एक्स, समझ में आ रहे हैं, पूरे में डी एक्स है, मैंने कुछ मैनिपुलेशन की है क्योंकि ये पता चलेगा अभी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू पाई बाई टू लॉग ऑफ टू साइन एक्स कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ टू एक्स हाँ। बाई माइनस टू। लॉग टू डी एक्स। तो ये तो बाई टू हो जाएगा ना, साइन एक्स टू एक्स बाई टू। साइन एक्स टू एक्स कहाँ पे, अब मैं ये वाले इसको, ये फॉर्मूले देखो में ये देखो लॉग ऑफ साइन इसमें एक्स टू देखो एक्स बाई टू। इसमें देखो, अब मैं ओपन करता हूँ, नहीं नहीं वैसे कुछ नहीं करना है, जीरो टू पाई बाई टू log of sin 2x minus dx minus इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log 2 dx। ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो yes. मैं आई की अब हाँ, इधर इसमें सब्स्टिट्यूशन करता हूँ। पुट 2x इक्वल्स टू टी। ठीक है। t अब x 2x इक्वल is टू टी equals आ to गया, तो dt, लिमिट चेंज होगा। लोअर लिमिट क्या like है, x 0 है, सो टी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है। हाँ, अपर लिमिट क्या होगी, टी का वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है, सो पाई तक pi होगा, by 2. पाई तक होगा। ठीक है। अब 0 टू पाई आया था, नीचे लिखते हैं थोड़ा, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई। अब मैं थोड़ा इधर कुछ कर रहा हूँ, कलर चेंज करते हैं, बहुत लंबाई की कलर हो गया। नेक्स्ट, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई टू। सही है। प्रकार समझ में आ रहा है। हाँ, सो ये हो जाएगा लॉग ऑफ साइन टी, और डी एक्स के बदले में डी टी बाई टू, हम्म, तो माइनस 1/2 निकलेगा और sin t, जीरो log टू, of sin t. ये हो जाएगा इंटीग्रल जीरो टू पाई, ये हो जाएगा लॉग टू इंटू एक्स, लिमिट जीरो टू पाई बाई टू। ठीक है। हम्म, Okay. Then I equals to 1 by 2 integral 0 to pi log of sin t dt minus pi by 2 log 2। ठीक है। हाँ, Next, mm, what should be the next thing? Okay. वापस तो वही आ जा रहा है log of sin. ये जो log 0 to pi, ये जो है एक बार क्वेश्चन देखना क्या है, हमने कहाँ से चालू किए हैं। Log of 1 plus cos x. नहीं नहीं, यहाँ से, ये देखो ये वाला इक्वेशन नंबर 3। हाँ, इसमें मैं पहला प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, एफ हाँ, ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ टी डी टी हाँ, ए टू बी, ए टू बी, हाँ, ये वाला प्रॉपर्टी। ठीक है। ये हो जाएगा जीरो टू पाई लॉग ऑफ साइन टी डी टी, है कि नहीं, हाँ, ये आई के बराबर है, हाँ, तो ये हो जाएगा आई तो बाई I टू। इधर रहेगा. ठीक है। हाँ, माइनस पाई बाई टू लॉग, log 2, तो ये 2i, कैसा, 2i हो जाएगा. अ, 2i is equals to 1/2 minus pi by 2 ये log वेट 2. वेट 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 वेट, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आई को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई बाई टू। ठीक है। आई माइनस आई बाई टू हम्म, इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू लॉग टू। log. ठीक है। हाँ, और आई माइनस आई बाई टू कितना होता है, आई बाई टू इक्वल्स टू माइनस पाई बाई टू हम्म, लॉग टू, टू टू हाँ, कैंसल्स, दैट इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू माइनस पाई minus pi लॉग 2. टू। इस क्वेश्चन को आप याद से ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, वरना समस्या जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है। हम्म, ऑलराइट। alright. ओके। सो ये वीडियो आप क्लास के बाद देखोगे, हाँ, तो मैं इसको तुरंत अपलोड कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है. ओके। ऑलराइट। बाय। Bye. टेक केयर। राइट। Yeah,